Color image segmentation is a very important topic in our image analysis, and you can see that very few people have done research on this. Means literature is very less in this field. So today we are going to discuss about color image segmentation, and also that how we can do color image segmentation using clustering technique. तो प्रैक्टिकली हम एक देखेंगे कि कैसे हम कलर इमेज सेगमेंटेशन करेंगे यूजिंग clustering algorithm. And clustering algorithm we are going to use is k-means clustering. Okay, so just let me share the screen. So इसलिए मैंने ये लेक्चर का नाम दिया है color image segmentation using k-means clustering. Okay, now what does it mean by color image segmentation? First, look at this image. Okay, this image I have taken from Berkeley image segmentation dataset. Remember the name. That will be very useful for those who are doing research in this field. ये डेटा सेट हम मैक्सिमम टाइम इसमें डिफरेंट टाइप का डेटा है वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस स्टैंडर्ड इमेजेस के ऊपर अपना एल्गोरिथम टेस्ट करते हैं, राइट, ट्रेन एंड टेस्ट करते हैं. सो आल्सो यू फ्रॉम वेयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दिस, व्हाट डज इट मीन बाय कलर इमेज सेगमेंटेशन. तो पहले ये इमेज दिखाई दे रहा है एंड यहाँ देखो, दिस इज द सेगमेंटेड इमेज विथ 5 कलर्स. तो ये सेगमेंटेड आउटपुट है. नाउ कलर इमेज सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय कलर इमेज सेगमेंटेशन? इमेज सेगमेंटेशन, you all know that we divide the image into different parts, different segments, right? So similarly, this color image segmentation is a technique in image processing that involves dividing an image into meaningful, distinct regions based on color. Okay, meaningful, distinct regions based on color. मैं पहले भी बोला था, जब आप एक पूरा इमेज का रीजन को कंसीडर करते, लेट इट बी आर, and we are dividing it into n regions. Say they are R1, R2 up to Rn. Let me write it for you. ठीक है, ये R1 है, R2 है, लाइक दैट आपने n सेगमेंट्स बनाया है. ठीक है, और ओवरऑल जो ये रीजन था, ये क्या था आपका? दिस रीजन इज R. So how can we write this? Just R is equal to, agar this is a proper segmentation, we can write like this: I goes from 1, 2, and then this is Ri. So this is the definition of segmentation. And also, if suppose Ri, and Rj are two different regions, or you can say two different segments, then Ri intersection Rj will be what? Null. Okay, no elements will be there in the intersection of Ri and Rj because they are the distinct segments. I hope the mathematical definition is clear. Okay, now let's come back to this part. So color image segmentation, this is a technique in image processing that involves dividing an image into meaningful distinct regions based on color. The goal is to simplify or to change the representation of an image to make it easier to analyze. हम divide क्यों करते हैं? हम segment इसलिए करते हैं ताकि एक particular region में हम उसको analysis कर पाए, उसको focus कर पाए. ठीक है? Now, color image segmentation is used in different applications, you know, object recognition, scene understanding, medical imaging, industrial automation. There are many applications where we can apply this. Now, in color image segmentation, there are some steps involved, right? Some steps involved. So what are they? First, the segmentation process explore the color information to group pixels with similar characteristics together. तो जो ये सेगमेंटेशन है, तो सेगमेंटेशन कुछ होमोजेनिटी क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके हम उसको ग्रुपिंग करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, राइट. यहाँ पे हम वो कलर फीचर्स को देखेंगे, कलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम उसको ग्रुपिंग करेंगे. ठीक है, जस्ट लेट मी चेक. ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट कलर स्पेस. You know, color space is what you can consider where we can perform the
color computation that is known as color space, right? There are different color spaces, RGB, LAB, HSB, different color spaces as per our requirements. Now, first, we have to convert it into a color space that makes the segmentation easier. Common color space that we use is RGB, that is R, red, green, blue, but we have other color spaces like hue, saturation value, and light A and B channels. Now, each color space has its own advantages, like SSB, LAB. They are often considered better for segmentation because they separate the color information from intensity. क्योंकि वहां आपके पास एक particular devoted channel है जिसमें आप क्या रख सकते हो, इंटेंसिटी रख सकते हो, और बाकी चैनल्स में आपका कलर इंफॉर्मेशन है, मिक्स नहीं है आरजीबी की तरह, ठीक है। जैसे कि एसएसबी में आपका वैल्यू चैनल है, राइट। एलएबी में जैसे आपका पास एल चैनल, लुमिनेंस चैनल है, राइट। नाउ next thing is the color based region identification. Color features are extracted from the chosen color space. Pixels are grouped based on similarity in color values, and for that we can use the techniques like clustering, because this particular class is for using clustering, so we are going to use the k-means clustering. Then we have some other options, like you can go for region growing algorithm also, you can go for auto thresholding also. So there are so many of them you can opt for, but I will suggest that go for clustering if you want a better segmentation, right? Now, in case of k-means clustering, it partitions the pixels into cluster based on similarity of their colors, separating the different regions or objects. तो के मीन्स में क्या होता है, आपका जो पिक्सल्स है वो पिक्सल जिस कलर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट होमोजेनिटी we group the pixels into different regions, okay, and that number of colors we will choose for those grouping, we have to define it beforehand, ठीक है। तो फिर सेगमेंटेशन टेक्निक में आपका थ्रेशोल्डिंग है, clustering है, thresholding means selecting color ranges to isolate the objects of interest. Clustering, like k-means, means shift to group pixel. Edge detection, you can also use that, identifying the boundaries based on color contrast. Then region growing algorithms are also there, expanding the regions from the seed points based on color similarity. आप watershed use कर सकते हो इसके लिए। देन उसके बाद आप पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हो टेक्निक्स such as morphological operations, dilations and erosions can refine the segmented regions, removing the noise or filling the small gaps for smoother result. तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग में ये morphological operation करके, जैसे डायलेशन है, इरोशन है, जिससे आप क्या करोगे, जो segmented region मिला है साथ में आपको जो नॉइजेस और गैप कुछ मिला है उसको फिल अप कर सकते हो, नॉइज को हटा सकते हो, राइट। इसके मैंने जैसे बोला आपका बहुत सारे यूजेस हैं, लाइक यू कैन यूज इन मेडिकल इमेजिंग, यू कैन यूज इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यू कैन यूज इन सीन सेगमेंटेशन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, you can I can give you one example, like isolating objects like fruits in agriculture images by their color. Then suppose differentiating between sky, trees, and water in landscape photography. Similarly, detecting specific tissues or structures in color coded images, like histological images. नाउ ये हुआ आपका कलर इमेज सेगमेंटेशन के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ अभी हम क्लास के टॉपिक में आते हैं कि कैसे हम के मींस क्लस्टरिंग से कलर इमेज सेगमेंटेशन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा आपका, यू हैव टू अपलोड द इमेज, राइट। हम गूगल कोलैब में कर रहे हैं, तो हम गूगल कोलैब में क्या करेंगे, एक अपलोड ऑप्शन रखेंगे, देन उसको लोडिंग करेंगे, लोड द अपलोडेड इमेज एंड कन्वर्ट इट इनटू आरजीबी फॉर्मेट इफ इट हैज एन अल्फा चैनल और बीजीआर फॉर्मेट, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू आरजीबी फॉर्मेट अगर इसके पास अल्फा चैनल है तो। देन उसका ओरिजिनल इमेज को हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे टू वेरीफाई करेक्ट लोडिंग। देन इमेज रीशेपिंग करेंगे, ठीक है, अपलोडिंग के बाद क्या करेंगे, हम इमेज रीशेपिंग। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, रीसेप द इमेज डेटा फ्रॉम ए 3D array, that is height, width, color, channels. 3D, 3 dimensional, we are considering height, we are considering width, we are considering the color channels. Now we will convert it into 2D array, where each row represents the RGB values of a single pixel.
ठीक है, अभी 3D से हमने 2D में कन्वर्ट कर लिया, और जहां आपका हर एक रो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आरजीबी वैल्यूज ऑफ ए सिंगल पिक्सल. नाउ कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ पिक्सल वैल्यूज इनटू फ्लोट 32, ताकि जो कॉम्पेटिबिलिटी हो जाए ये क्लस्टरिंग के लिए. सो फॉर कॉम्पेटिबिलिटी विथ क्लस्टरिंग वी आर कन्वर्टिंग द पिक्सेल्स वैल्यूज डेटा टाइप इनटू फ्लोट 32. So we have done the reshaping. Mainly, we are doing 3D to 2D conversion and putting them in a 2D array and then converting the data type into float 32. Then we have to define the number of clusters that is on our hand. Means we have to look at the images. We have to at least guess the number of clusters that we have to put. Suppose there are 5 different color segments you want to put, so you can put 5. तो आपके ऊपर है. तो यहाँ मैंने 5 put किया है for 5 color segments. So define k number of clusters based on the desired segmentation granularity. तो ये अलग-अलग image के लिए, for different images you have to choose it properly, because if you choose it wrongly or some values that is 5 from your correct one, then obviously results will not be accurate. तो ये मैंने 5 choose किया है. Initialize the k-means clustering model with the chosen number of clusters. ठीक है, तो if you can recall that how k-means clustering act, so shortly I'm giving you the overview for a flowchart. See, first we are choosing the number of cluster, then we determine the centroids, that value which is actually representative of that particular cluster. We can consider also as a mean of that particular data points inside a cluster, right? Then calculate the distance between each object and centroid, and then the objects, whatever the object or data points we have, we will group them or will put them into that cluster where their distance is minimum. So group the objects to clusters. Then this process will be continued. If convergence occurred, we have to stop. If it doesn't occur, then we have to continue the process until and unless the convergence occurs. Means at one time, if the centroid will not be changed, centroid और मूव नहीं करेगा, तो उस समय हमने convergence अचीव कर लिए, then we will stop. ये k-means clustering है. Then अभी फिर से आ जाता है स्टेटमेंट. नाउ अप्लाई द k-means clustering algorithm. तो क्या है? क्लस्टर असाइनमेंट यूजिंग k-means. So apply the k-means clustering algorithm to group pixels based on color similarity. Color similarity के बेस पे हमने वो pixels group किया है. Now obtain the cluster centers and assign each pixel to the nearest cluster. ठीक है, हमने cluster center को क्या किया है? Cluster center को we are obtaining the cluster centers representing the dominant colors and assign each pixel to the nearest cluster. तो हर एक पिक्सल को हम उसके नियरेस्ट क्लस्टर में असाइन कर दिया है. ठीक है, ये हो गया आपका. ठीक है, तो मैंने क्या किया? कलर सिमिलरिटी के बेस पे पिक्सल्स को ग्रुप किया, उसके बाद क्लस्टर सेंटर हमने ऑब्टेन किया और हर एक पिक्सल को उसके नियरेस्ट क्लस्टर में असाइन कर दिया. देन रीकलर सेगमेंटेड इमेज. नाउ वी विल रिप्लेस ईच पिक्सल्स आरजीबी वैल्यू विथ इट्स करस्पॉन्डिंग क्लस्टर सेंटर्स आरजीबी वैल्यू. ठीक है, then receive the recolored image back to its original dimension for display as a segmented image, because you have converted or you have converted this 3D to 2D, right? Now you have to convert it back to 3D. So we will receive the recolored image back to its original dimension for display as a segmented image. ये हो गया. तो ये recolored a segmented image. Now we'll display the segmented image with k unique color representing each क्लस्टर. तो इसके लिए हमने क्या किया? क्लस्टर मार्क्स क्रिएट किया. वी विल क्रिएट वन क्लस्टर मार्क्स. वी विल क्रिएट अ बाइनरी मार्क्स फॉर वन स्पेसिफिक कलर. से सपोज क्लस्टर 0 टू आइसोलेट द सेगमेंट इन दैट इमेज. मतलब क्लस्टर्स देखो, हमने यहाँ पे 5 क्लस्टर्स क्रिएट किए थे, राइट? तो क्लस्टर 0, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4. So we will display all of them. Okay, then set non-cluster pixel values to black, leaving only the selected cluster visible. तो क्या करेंगे? सपोज एक क्लस्टर 0, उसमें जो कलर हमने चूज किया है तो उसको रखेंगे और बाकी सबको हमने ब्लैक कर देंगे. ठीक है, we will set the non-cluster pixel values into black. Similarly, we can display the objects in different clusters. So how we are doing it? We are doing it. Let's have an overview of this cluster marks creation.
तो specify which cluster to isolate by selected cluster. Like here we have selected cluster 0. Now create the binary marks. Binary marks means what? Generate marks where all pixels belonging to the selected cluster are set to 1 or 255 for visibility in an 8-bit image. अगर हमने यहाँ 0 to 255 कंसीडर किया है तो 255 हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज बाकी सबको हम 0 पुट करेंगे. Reset the marks to the original image dimension and setting other cluster pixels well to 0. We'll display them. Marks CMap gray to visualize the binary marks, then apply the marks to the image. Use the marks to retain only the pixels of the selected cluster and other to black. Okay, then after that we can display the marks cluster, display the image with the isolated cluster showing only the pixels belonging to the chosen cluster. So ये पूरा technique है. These are the methods involved in this algorithm. Now let me show you the practical part. So for practical, I'm considering this data set, very famous data set that is known as Berkeley segmentation data set. Okay, just let me Berkeley segmentation data set. You can directly go to this. This is open data set. See BSD S500 and extended version of BSD S300 that includes 200 fresh text images now available in a different site. Anyway, you can come directly to the dataset by image. You can go to the any of them. Now I want some say color images, so go to either taste and train. Now let's see this one. So I'm choosing this image for my result. I'm saving it in my drive. Then now as this is done in Google Colab, so see we have to import CV2 for OpenCV, NumPy for this array-based calculation, for matplotlib to show the plot. Then what we are doing, k-means clustering, right? sklearn.cluster import k-means. Then Google Colab import files because I want to upload the files from my system itself. Then from IO import bytes IO. Then from field import image. तो ये हो गया uploaded files.upload image आप अपने system से ले रहे हो. Then image part you have to select that uploaded one. Then you need to show it up means in an array np.array image. ठीक है. Now convert image into RGB if it is not. अगर ये RGB में नहीं है तो हम RGB में convert कर रहे हैं. तो अल्फा चैनल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? If image.shape2 is equal to 4, then image CV2 CVT color image CV2 color RGB A to RGB. Else अगर नहीं है तो image CV2 color BGR2 to RGB. Then we are displaying the original image with this codes. Very simple. You can see this. Then pixel values means first step क्या था आपका 3D से 2D में, right? Reset the image to a 2D array of pixels. We are doing it using this reshape function, image.reshape -1 3. Then we are putting the data type as float32 for compatibility, np.float32 pixel values. Okay. So that's done. Then we are defining k as 5. You can choose your own one for as part of image is concerned, right? K means n cluster is k, then random state 0, then levels k means fit predict pixel values, centers हमने centers k cluster centers को ले लिए, then centers np unit centers, segmented image centers levels of flatten, segmented image shape basic shape we have to do. Then we have to show the segmented image, right? Plot image show segmented image with k colors. Suppose here 5, so 5 colors. Now we are creating this part is optional, but I think it is very important to look at the class objects in different clusters, right? Create as marks for one specific cluster, marks levels dot reshape image shape 2 is equal to 0, sends the number to set a different clusters, segmented cluster and the copy image, segmented cluster marks is 0. Set non-cluster pixels values to 0. जिस cluster का value है उसी को हम दिखाएंगे, otherwise बाकी सबको हम black में put कर रहे हैं. So the segmented clusters से cluster 0, cluster 1 तक हम दिखा रहे हैं इसमें. Let's run this.
I'm choosing the image, say I'm putting it in the segmentation data set. Let's consider this, upload this. It is being uploaded. You can see ये घूम रहा है, मतलब ये हो रहा है अभी, uploaded हो रहा है, and it takes 50 seconds for completion. 15 सेकंड में हो गया आपका. तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज ये था. This is the original image. This is the segmented image with 5 colors, right? Now क्लस्टर जीरो में क्या है? देखो क्लस्टर जीरो में जो हमने बाइनरी मार्क्स क्रिएट किया था, उसमें हमने क्लस्टर डिफाइन किया 0, बाकी सबको हमने ब्लैक में पुट कर दिया. तो यू कैन सी द क्लस्टर 0 दैट मींस जीन स्पैन, राइट? ये कलर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है और इस कलर का बाकी सारे ऑब्जेक्ट इसमें आइडेंटिफाई हो रहा है. सेगमेंटेड क्लस्टर 1 में आपका थोड़ा बहुत चेंजेस इन कलर है, ये थोड़ा हल्का सा ग्रीन यू कैन सी हियर, तो ये भी डिस्प्ले हो रहा है. सिमिलरली से आई वांट टू सी इन द क्लस्टर नंबर 3, सपोज लेट मी राइट द कोड फॉर इट. से मैं इसको कर दिया आपका क्लस्टर 3, ठीक है. जस्ट ए मिनट, रन हो रहा है. तो ओरिजिनल इमेज तो एज इट इज आ गया, एक क्लस्टर 3 आ गया, राइट? सिमिलरली यू कैन गो फॉर क्लस्टर 4 ऑल्सो, ठीक है, वो भी कर लेते हैं हम. तो देखो आई वांट टू सी द व्हाट एवर द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लस्टर नंबर 3. 3 नंबर वाला क्लस्टर में कौन सा है? तो उसके लिए हमने बाइनरी एक मास्क क्रिएट किया, वेरी इजी. ये जो कोड है आपको दिखाई दे रहे हैं, लेबल्स डॉट रिसीव इमेज डॉट शेप 2 इज इक्वल टू 3. थर्ड क्लस्टर में मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है. बाकी सबको मैं 0 पुट कर दिया, तो ये क्लस्टर 3 में ये आ रहा है. यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स हियर इन द क्लस्टर 3, ठीक है. और सपोज आप क्लस्टर 4 के लिए करना चाहते हो, अगेन यू नीड टू जस्ट राइट दिस कोड, जस्ट ए मिनट. तो ये हम फिर से क्लस्टर 4 का दिखा देंगे. तो क्लस्टर 4 में क्या है, लेट्स सी. ओके, सेम इमेज आई एम कंसिडरिंग, ठीक है. ये ओरिजिनल इमेज. तो दिस इज द क्लस्टर 4. क्लस्टर 4 में आपको दिखाई देगा कि ब्लू कलर को हम ज्यादा स्पेसिफिकली चूज किया है, तो ब्लू कलर ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल हियर, बाकी पुटिंग अदर्स इनटू ब्लैक. So see, this is the k-means clustering, where by which we are doing the color image segmentation. Is very useful because with this segmentation you can easily locate the different objects in the different clusters, and then those objects can be isolated and you can make further analysis on that. ठीक है, तो ये बहुत important class था. I hope you will do the coding part properly. You have understood the concept behind this color image segmentation. Still, if you have any doubt, then please ask me. Thank you.